Good morning, my dear student. Welcome you all to my YouTube channel, Learning Island. Today, I have come up with a solution for your science book, chapter 10, that is living creature and exploring their characteristics. This is chapter 10. Okay. This is the part 1 video of chapter 10. Here you will get basic understanding, explanation of every in-text topics, probable exam-oriented question and discussion, solution of in-text question with elaborate explanation. So, first of all, I am urging you to remain with me till the end of the video. You will get so many things here. Okay, my dear students. So let us go to the main topics. Today's main topics. I already told you. So this is the chapter I am talking about. Okay, this is chapter 11. So I'm going to chapter. See, living creature, exploring their characteristics. First of all, start with a great picture in the nest, and the birds is looking toward this, and two children are playing with. They are looking after something that is snail. So this chapter is with lots of story. Okay, you know, in this chapter, lots of inside questions are there. So you will have to go through lots of fill up comes for filling up. Okay, so while explaining, I will ask you to mark some from where the questions may come. Let us start. Advi and Ayush go for a morning walk with their parents. Advi notes some shells and tries to pick them up. Her mother advises her not to do and so, and explain that to a living snail and is actually a part of its body. See, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो चिल्ड्रन खेल रहे हैं ना, ये सब शेल है, इसके अंदर में स्नेल निकालता है, ठीक है. तो so his father is saying that don't pick it up, do not do so, ठीक है. Don't pick it up because it is a habitat or home for the shell. Here you can mark it. The shell could be home to a living snail and is actually a part of its body. ये जो शेल है ना, इसका बॉडी का एक पार्ट है एंड ऑल्सो शेल्टर फॉर दिस लिविंग बीइंग. ओके, so you can ask the question in the exam that what is the home of a snail, living snail? You can say its shell, which is a part of its body. Okay, so let us go the next step. The approach the teacher to understand how a shell which is not even moving could be a body part of a living snail. Teacher initiate a discussion in classroom on living and non-living. So we'll discuss about living and non-living things around us. Okay, so you got it. So let us go far. I'll go very slowly so that you can understand and be able to answer any questions comes in the exam. So this is an activity. So I am going through very fast look around in your classroom and you may find many examples. The pencil that you are holding, the book that you are reading for the PGN name in living and non-living. Okay, so here you see they have made a table. Pencil, you know, they can also ask the question from here also whether this pencil is a living or non-living. Okay, they have given an example. This non-living, and book is also non-living. So here answer will be non-living.
Okay, pigeon, living, you do know it. Car is non-living. Okay, you know it. Plant is living. Any kind of plant is living. Any other you can mention. Okay. यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आपने जो बोला ये नॉन लिविंग है, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द लेटर ऑन, एंड करेक्ट आंसर रीजन. ठीक है, तो लेट अस मूव, विल गेट ऑल द आंसर. ओके, सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड. See, what sets the livings apart from the non-living? You see, why do we think pencil is a non-living but pigeon is living? What do you think are the difference? But are the difference between varieties? Do you identify living things? Okay, let us see the next. देखो, यहाँ पे जहाँ पे I think कि no need to discussion, so I am leaving those lines. I'm only for understanding and also for exam point of view. See, can you consider movement as one of the characteristic to differentiate between the living and non-living things? Yes, but sometimes no. List 5 things around you that can move on their own. A movement should be happen by their own. Then the movement is a characteristic of living beings. Okay, do you think that all 5 things that you cannot need it? So you can mark over here the movement. Movement is one characteristic of living being. Now, even though plants do not move from one place to another, they do slow certain types of movement. Opening a flower is one of the example of movements of plants. Very, very important. You can ask a question in the exam that give an example how plant moves. Because we know plant stands on the roadside in the forest, but how it can move? Can you give an example? Yes. In the plant, there is a flower. Okay. So flower, when it blossoms, so they show certain movements, right? So opening of flowers is one of the example of movements in the plants. Very, very important. Okay, it's very, very important. Another example of movement in plant is seen in insectivorous plant. Look, this is an insectivorous plant. When insects come here and sit over here, then these opening strips get closed and trap it. So this happens. So this is another movement in the plant. Okay, insectivorous plants are dependent on insects for their nutrition. So what is the name of an insectivorous plant? Drosera. Drosera. Okay, this is the name of an insectivorous plant. ये एग्जाम में आ सकते हैं. नेम एन इंसेक्टिवरस प्लांट ड्रोसेरा, और बहुत सारा है. पीचर प्लांट. ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है, इसमें एक सॉसर लाइक ए सॉसर लिव सेविंग, ये लिव है. ठीक है, मेनी हेयर, इसमें बहुत सारा हेयर है, लाइक प्रोजेक्शन एंड अनइक्वल लेंथ एंड स्टिकी. ये स्टिकी होता है जब कोई इंसेक्ट इसमें बैठता है, then they got stuck with this. They can never get back themselves from there. So whenever an insect enters the saucer, hairs move inward and trap it with their sticky ends. Okay. So, and also another example, see climbers. You see climbers moves. Climbers are also wind. Climbers also wind themselves around any object to move upward, right? So you just mark with your pencil in your book all this line, because filling the gap or the questions, short question may come up
from this section. Okay, I am telling you the questions and also probable answers, so you can write it down. Okay, so let us move forward without any delay, right? Because your book has been designed in such a way, if you do not go through all these inside text, you would not be able to understand, as well as would not be able to answer the questions in the exam. Okay, so let us now one more parameter is growth. Living being जो होता है ना, एक तो मैंने we have now discussed, that is movement. Another parameter is growth. So you mark it in your book. See, growth is another characteristics. Okay, growth is in our body. Plants and other living beings also grow. Can we consider growth as a characteristic of living being? Yes. Can we consider growth as a characteristic of living beings? Yes. Very, very. Okay. So now think a process which we cannot live. Count a number of breath you take per minute after a normal walk, after a run, and after a few dance steps. Recorded data and observe. Do you notice any difference in your number of breaths and each minute? Yes. The process, you see, the process, ye mark karo, the process of breathing in other animal like dogs, cats, cows and buffaloes, मतलब breathing मतलब क्या, movement हो रहा है, and it helps them to digest. We inhale oxygen, right? So, and also movement of abdomen. Okay, so let us go here. See, when we breathe, very important, when we breathe out, क्या होता है, the air moves from inside our body to outside. So breathing is a part of process called respiration. So what is respiration? Breathing is a part of process called respiration. Okay. Now question may comes, when we breathe in, what type of things goes inside? यार यार में भी बहुत कुछ रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. So which gas we inhale? Okay, see, you will get the answer here. यहाँ पे एक लाइन को नोट करो कि if you see the previous your questions of PT1 and PT2, you got so many fill in the gaps. So here you see all living beings dash respire. ठीक है, just note it down with me. Now one more thing, देखो, removal of waste products from the body is called excretion. Question may come, what do you mean by excretion? Okay, so this is the answer. Removal of waste products from the body is called excretion. Okay. Okay, now go to the next topics. ये जो एक्सक्रेशन है ना, ये एनिमल्स में, लिविंग बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में, सब में होता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ symbols or notice or symptoms that you can say that this is living things. Okay, living beings. Now let's see, while walking without shoes, or you
accidentally touch a hot cup of tea, stepping on a thorn and touching a hot object are stimuli. Anything or any event that prompts living beings to respond is called stimulus. Very, very important question. Very, very important question. ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा. Definitely come. So here you mark. What is stimuli? Anything or any event that prompts living beings to respond is called stimuli. So I am explaining you. If anybody put lights on your eyes, suddenly your eyes will get closed. And if you see a snake passing through the road while you're walking, you will suddenly stand without thinking anything. So this kind of response you are not doing by thinking. It is happening automatically by seeing or feeling some extraordinary things. So this is called stimuli. It is getting stimulated. These are excited you. Okay. So automatic response. This is called stimuli. अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया देखो. In plant, you have seen the touch me not plant है ना. इसको बोलते हैं चुई मुई. So chui me, what is the another name of touch me not? Chui mui. So this tree, you can test it. You might have tested it. If you touch here, that it will fall down. Okay. So this is stimuli. This is called responses stimulus, stimuli. So plants also respond to stimuli. Plant also stimuli. That is, for example, touch me not. You will be asked a question. Give an example. Give an example of plant which shows stimuli or which has stimulus. That is touch me not or mimosa, chuimui, lajalu plant. They are all, okay? So their leaves when we touch them have, okay? So you can all this can come. Okay. And one more thing, amla, Indian gooseberry, amla. इसका भी पत्ते में टच करोगे तो ऐसे होता है. All living things responded to stimuli. So this is another important. You can come. All living beings respond to dash stimuli. So this kind of question may come in your exam. Okay. So my dear student, hope you are getting understand and also enjoying the session, right? So let us go to the next part. I'm again and again telling you, please mark this by the pencil in your book so that at the time of exam, you can study this very fast, because you cannot go through the entire book. You only go through the marked text or marked line that will help you getting more score. Okay. All living beings reproduce. Reproduction is another most important thing. Okay. Reproduction. All living beings, including plants, reproduce. Reproduction. What is reproduction? Question आता है. What is reproduction? Okay. So reproduction is the process of producing new ones of one's own kind. One's own kind. Touch me not plant का जन्म देगा. Human being का जन्म देगा. Doggy का जन्म देगा. So own kind होगा. Why is reproduction necessary? It is necessary. Very, very important question. Why is reproduction necessary? It is necessary for continuity of life. Very, very important part. BBI. So my dear student, note it down seriously, okay? When a living being is not able to exhibit all the above mentioned characteristics, despite the availability of all sources like food, air, water, needed for being alive, it is said to be dead. So when a living being is said to be dead, question,
when a living being is to be dead. Okay, when a living being is not able to exhibit all the above mentioned characteristic, अगर कोई लोग मर जाता है, उसको आप खाना दोगे तो खाएगा, उसको किसी से मारोगे तो वो क्या रेस्पॉन्स करेगा? मतलब ये स्टिमुली, इसमें स्टिमुली भी नहीं रहेगा, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, वो इनहेल नहीं कर पाएगा, सो ऑल ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. सो देयर बी नो मूवमेंट in living in dead body, there will be no movement, they will not response. Okay, they will not inhale everything you get. So this is the dead. So let us go to the next part. My dear students, there is no hurry, but we should understand science. You cannot, remind if you do not understand properly, and if you understand, then it will automatically sit in your brain. Now, so far we have talked about the living beings. Now we will talk about non-living beings. What is the characteristic of non-living beings? Okay. See, any, they also expire, explore, क्या बोला, food and grow. They also respire, अच्छा, stimuli and eventually. Absence of any of these features, जिसमें movement नहीं है, movement by zone, जिसमें मूवमेंट नहीं होगा बाई जोन, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, जो स्टिमुली नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल सेंस का रेस्पॉन्स नहीं करेगा, जो फूड नहीं खाएगा, ये सब होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जिसका ग्रोथ नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, सो नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स का डिफरेंस समझ में आ गया ना? वेरी गुड. सो वी कैन प्रोसीड. ओके, मैंने पहले बोला था जहां पे आई फील दैट यू नीड explanation, I'm giving the explanation for those parts only. Okay, so because I am not wasting time unnecessarily, and also not go very fast the part where it is very important. Okay, so now one question: germinating or germination. What is germination? प्लांट में जो सीड होता है, ऐसे वो सीड बीच में से फट जाता है, फट के दो पार्ट हो जाता है, एंड बीच में से ऐसे पत्ते निकलते हैं. ठीक है. छोटे बार्डिंग, ये जो बार्डिंग होता है सीड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सनलाइट, वाटर, then it is called germination. Okay, so सीड जर्मिनेशन, तो इसके लिए क्या चाहिए? मैंने बोल दिया, एयर, सनलाइट, वाटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, एंड ऑल्सो सॉयल चाहिए, सॉयल. ओके, सो ये चार थिंग चाहिए: एयर, वाटर, सनलाइट, सॉयल. सम इन सम केसेस सनलाइट के बगैर, विदाउट सनलाइट भी कुछ प्लांट्स है जिसका जर्मिनेट हो सकता है इन डार्क प्लेस. ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग over here. So please remain with me with a great patience and enthusiasm. Okay, my dear students, those who are enthusiastic and have patience, they can grow faster and they can move in the same direction, in the good direction. See, germination का जो कंडीशन, मतलब जो बडिंग होता है सीड से प्लांट का, वो कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया. सी, इन द फर्स्ट टब, इन द फर्स्ट पॉट, केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट. इसको, ये सन है, ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है. ठीक है. एंड देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको. ये इसमें सन है, इसमें भी सन है, इसमें भी सन है, इसमें सन नहीं है, दैट इज ये डार्क है, अंधेरा. इस ये पॉट है, इसमें सॉयल है, ये सॉयल, सब में सॉयल है. तो देखो ये तीनों में सन है, सॉयल है, सन है, सॉयल है. इसमें वाटर कितना है? वो
एक्सप्लेन किया गया इसमें, मतलब जितना चाहिए वाटर इतना ही दे दिया गया, इसमें ज्यादा वाटर दे दिया। इसमें पॉट सी मोस्ट सॉयल, मॉइस्ट सॉयल केप्ट इन डार्क, तो जैसे डार्क में रखा गया। पॉट डी विथ मॉइस्ट सॉयल, मतलब पानी भिगा के सॉयल। मॉइस्ट सॉयल मीन्स इसमें वाटर एंड सॉयल है, मतलब वाटर लिमिटेड है, जस्ट मिट्टी को भिगा के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो डी मॉइस्ट एयर भी है, डायरेक्ट सनलाइट भी है। ठीक है, पॉट डी विथ मॉइस्ट सॉयल केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, और पॉट ए इन डायरेक्ट सनलाइट नो वाटर, अच्छा इसमें वाटर नहीं है, इसमें नो वाटर। ठीक है, तो वाटर अगर नहीं है तो इसमें तो जर्मिनेशन होगा नहीं। मैं बोला था क्या चाहिए यार, चाहिए वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और सोयल चाहिए। तो सोयल तो सब में है, सोयल एस 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 सब में है। इसमें वाटर नहीं है, इसमें वाटर है बट ज्यादा है, मार्च वाटर है। इसमें वाटर तो है, डब्ल्यू तो है, बट सनलाइट क्रॉस। इसमें परफेक्ट वाटर है, परफेक्ट। सनलाइट, सनलाइट भी है, इसमें सनलाइट है, इसमें सनलाइट है। तो जर्मिनेट कहाँ पे होगा, इसमें होगा, क्योंकि इसमें सारे कंडीशन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स। ये टेबल में पीछे आपको मैं बता दिया सारा आंसर, टेबल में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपको दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आप देखो ये पॉट है, पॉट भी है, पे सब मैं जो एक्सप्लेन किया सारा एक्सप्लेन किया किसमें क्या है। अब यहाँ पे आपको टेबल में फिलअप करना है किसमें क्या है। ठीक है ना, इसमें क्या है आपको इसे फिलअप करना है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी, ये तो आप कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन किया ना। पॉट ए में क्या नहीं है तो लिखा हुआ देखो, फिर भी कर देता हूँ। इन डायरेक्ट सनलाइट, इसका मतलब सनलाइट है, एंड विदाउट वाटर, तो नो वाटर इसने बता दिया, वाटर नहीं है। इसमें एयर तो है, इसमें प्रिडिक्शन क्या होगा, इसमें जर्मिनेशन नहीं होंगे, वाटर नहीं है तो होगा नहीं, ये चारों होना चाहिए। ठीक है, इन डायरेक्ट सनलाइट, इसमें सनलाइट है, एंड एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर तो है, डबल मार देता हूँ, वाटर है, यस। ये ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, ये नो है। अब इसमें है क्या नहीं, इन डायरेक्ट सनलाइट एंड एक्सेस ऑफ वाटर, बी में। ठीक है, इसमें बी में क्या नहीं था, इन डायरेक्ट सनलाइट एंड एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब इसमें ज्यादा वाटर है, यार तो है ही है, तो क्या इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा वाटर होगा तो ये वाटर में डूब के वो सीड मर जाएगा, खराब हो जाएगा। इन कंप्लीट डार्कनेस, यहाँ पे तो सनलाइट है नहीं, वाटर तो है, एयर भी है, तो इसमें भी जर्मिनेशन नहीं होगा। इन डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट है, एयर है, मॉइस्ट सॉयल है, मतलब परफेक्ट है, इसमें जर्मिनेशन होगा। ठीक है, बाकी का बोला कि ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व क्या करना है, होगा ही, ये आंसर है। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, we will not do unnecessary things, only the necessary portion। यहाँ पे मैंने सब डिस्कस कर लिया। अभी यहाँ पे देखो सीड्स, ये जो सीड्स है ना, मैं बोला था कि सीड का दो हिस्सा होता है फट के, सीड्स क्रैक्स एंड बिकम टू पार्ट्स। ये सीड्स पहले ऐसा था, ठीक है, अब ये बीच में से क्रैक हो गया एंड यहाँ से जर्मिनेशन हो गया, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो, किसको, जहाँ से वो बर्डिंग निकलता है। एंड ये दो पोर्शन को बोलते हैं सीड कोट, अंदर वाला बोलते हैं कोटिलेडन। एम्ब्रायो ऐसे निकल रही है, जो निकल गया वो एम्ब्रायो है, इसको बोलते हैं कोटिलेडन। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा।
सो ऐसा एक सीड ड्राइंग देखे ना, यहाँ पे नाम नहीं देगा एग्जाम में, दे विल आस्क यू टू नेम इट। सो इट इज एम्ब्रायो, इट इज सीड कोट, कोटिंग है, ठीक है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें से ऑब्जर्वेशन में आया कि जर्मिनेशन के लिए नंबर वन वाटर चाहिए, मैंने आपको पहले बोल दिया था। अभी बोलेगा वाटर कैसे चाहिए, हाउ डज द वाटर हेल्प देम फॉर जर्मिनेशन। सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। वाटर enables the seeds to carry out the processes necessary for their growth. The outer covering of the seed is called seed coat. Water softens the seed coat and helps the tiny embryo inside it to develop into plant. ये जो सीड कोट है ना, ये तो रहता है हार्ड, तो पानी क्या करता है उसको सॉफ्ट करता है, एंड ये जो एम्ब्रायो से पत्ते इसको काट के निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये वाटर हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है हाउ वाटर हेल्प्स द जर्मिनेशन। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन एंड आल्सो द आंसर्स। ओके, you just mark it out. Now let us go to the next. वाटर चाहिए, एयर चाहिए एंड सोयल चाहिए, बताया था ना मैंने। तो हाउ एयर एंड सोयल हेल्प्स। सी, seeds need air for germination. Seeds needs air, water भी पहले बोल दिया था। They use the air available in the space between soil particles. Moreover, space between the soil particle allows roots to grow easily. अगर soil में अगर गैप नहीं रहेगा तो रूट्स जो है ना नीचे नहीं जा पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। और लाइट एंड डार्क कंडीशन, अब देखो लाइट कंडीशन में भी हो सकता है, डार्क कंडीशन में भी कुछ कुछ प्लेनेट में जर्मिनेशन हो सकता है, नॉट ऑल द प्लेनेट्स। सो लाइट इज वेरी मच नेसेसरी एंड ऑल्सो इन फ्यू केसेस डार्क कंडीशन में भी जर्मिनेशन हो सकता है। मैं बताऊंगा कौन सी प्लांट में होता है ये, ठीक है, वो है एक्सेप्शन। सो वी हैव लर्न दैट फॉर द बीन सीड्स प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल। जो बीन हम जो खाते हैं ना, सीन, बीन 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 के लिए ये लाइट नॉट एसेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स द लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, तो होगा बीन, ठीक है। आई एम मार्किंग इट हियर, बीन। इन जनरल मोस्ट सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन, बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड। जर्मिनेशन होने के बाद लाइट लाइट नीडेड है, अदरवाइज ये मर जाएगा, क्योंकि ये कैनॉट, द जर्मिनेटेड प्लांट बर्डिंग कैनॉट यू नो फोटोसिंथेसाइज, ठीक है। सो सीडलिंग जो जर्मिनेशन के बाद जो होता है ना, ग्रो होता है प्लांट, इसको स्मॉल प्लांट इसको बोलते हैं सीडलिंग, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज, here you see some very important portion, it has been highlighted in the books, you see. So now you will get the names of some plants which can germinate in the dark condition also. So some seeds flowering plant like coleus and Pitonia require light for germination. Okay, and flowering plants like calendula and ginea need darkness to germinate because, okay, ये आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ पे क्या बताया गया कि इन दिस चैप्टर माइंडफुल ईटिंग ए पाथ ऑफ हेल्दी बॉडी। हाँ, ईटिंग तो करना पड़ेगा ग्रोइंग के लिए। अब आता है ग्रोइंग में, ठीक है। जर्मिनेशन हो गया, अभी अभी ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ के लिए कुछ चीज लेना पड़ता है, ईटिंग न्यूट्रिशन, है ना। हाउ डू प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू सनलाइट, डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ। ये प्लांट को आप अंधेरा में रख दोगे और खिड़की के पास देखना, ये प्लांट जो है ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स द विंडो,
mainly toward the sunlight. Okay, this is the tendency of the plant. So it means it is responding to the sunlight. That is stimuli. It is growing towards in the direction of sunlight. This is the stimuli. Okay. So we'll get all this discussion, all these topics over here. So the plant respond to sunlight. Does sunlight affect the direction? Yes. How do you design activity? Here is again an activity. I will now let you know what is happening over here. See, upright plant kept in the sunlight from all direction. देखो यहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ है जिसमें प्लांट वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा हुआ है एज ए नॉर्मल. In the second top, the plant placed in a downward direction, upside down. And in the third figure, there is a hole and the plant placed on the top or on the cant in upside up in normal conditions. Okay. Inner view of the box दिखा रहे हैं क्या है कि upright plant kept in a sunlight from the all directions. Inverted plant kept in the sunlight from all directions and upright plant kept in the. यहाँ पे क्या दिखेगा मालूम है आपको? ये जो मैं पहले बताता हूँ ये सब चीज बुक में डिस्कस किया. आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स बिकॉज इट विल बी otherwise the video will be delayed. So I am explaining only the gist part over here. See, because of sunlight here surrounding, this plant will grow upward and the roots always go downward. This is called geotropic movement. Geo मतलब अर्थ, ये अर्थ ग्राउंड का तरफ ऑलवेज रूट्स जाता है. And the leaf part, that is the stalk stem, this goes upward direction. Upward direction means if sunlight is open, if it is open from all sides, it actually moves toward the sunlight. Okay, here you see in this condition the plant will bend and go upward and the roots will bend and go downward. And in this case, the roots will go downward as it is and the plant will not grow vertically. It will bend a little bit toward the hole because sunlight is coming toward the hole. Okay, so the topics which I have now discussed with you, all this has been written in this book, so you can go through it by pausing this video. I'm just moving, okay, because I had discussed these necessary parts with you. So let us go to the main topics right now. Here you see upright prediction करने, यहाँ पे प्रिडिक्शन करने के लिए बोला, मैं बता दिया था, शायद आप लोग नोट कर लिया होगा. ठीक है ना? ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया था. सो आप जरूरत नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दिस आउट. ओके, नाउ here you see the answer of these questions here. So hope it will help you. I have already explained this. Okay, this now we can again move the everything discussing over here. So just 1 minute. Here you see one scientist, Indian scientist. Okay, he is Indian scientist Jagadish Chandra Bose, was an Indian scientist who had did some fascinating experiments. I had now discussed with you the stimuli, that is the response to the sense, that is the external thing sense करना. ये तो living being तो करता ही है. The plant also have the stimuli, and this has been first discovered by this scientist Jagadish Chandra Bose, Indian scientist. Okay, plant also responds to the external things that has been first discovered by this scientist, respected great scientist. Okay, now ये नेम आ सकता है आपका. लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट. अब प्लांट का लाइफ साइकिल क्या है? पहले बड जर्मिनेशन होता है ना, फिर उसका सीडलिंग निकलता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर स्टेम ये बड़ा होता है, फिर ये. सो यहाँ पे स्टेप बताया गया. सो ये भी जरूरत नहीं है. सो लाइफ साइकिल जहां से जरूरत है मैं पढ़ता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो, a seed grows into a
young plant and matures to produce flowers and fruit. The fruit, in this case a pod, contains seeds which give rise to a new generation. ठीक है, फिर ये फ्लावर से सीड होते हैं, फिर फ्लावर से होते हैं फ्रूट, फ्रूट से होते हैं सीड, सीड से होते हैं फिर जर्मिनेशन प्लांट, फिर प्लांट ग्रो होता है, फिर प्लांट फ्लावर देता है, फिर प्लांट फ्रूट देता है, ऐसे चलते रहते हैं. दिस इज द लाइफ साइकिल. ओके, so there is a graph, there is a picture of this life cycle, the entire process from seed to plant and then to the next generation of seeds is called the life cycle of the plant. Okay, my dear student, this portion is very much important, so note it down. And next we'll see the plant cycle in figure. See, ये आपका ड्राइंग आ सकता है. ठीक है, ये ड्राइंग सीख लेना. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत. एंड दिस इज यू सी वेयर इज सीडलिंग, द स्टेज वन. सीड से तो शुरू होता है ना, सीड्स, देन जर्मिनेशन, बडिंग इट हैपेंस, देन लीव्स कम, देन अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स, में फ्लावर आते हैं, देन फ्रूट्स होता है, देन फ्रूट्स राइपेन के बाद इट पक जाता है, फिर ये यहाँ से सीड निकालता है, फिर देन अगेन प्लांट होता है. ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स. ओके by the students. So today I'm going to stop here because I do not want to make this video lengthy, because you'll also not feel very happy if I make it lengthier. So right now what happened, how far we have discussed and what we have learned up to this. We have learned living being and non-living beings, differences, what is their characteristics, and how they respond stimuli to the sunlight, condition of germination, and the life cycle of the plants. In the next video, that is chapter 10 part 2 video, we will see the life cycle of animals. Okay, and so on. So thank you student for being with me with a lot of patience and enjoying the sessions. So if you really feel it good and understandable, usable, beneficial for you, so please forward this video to your friends also, so that they can also get the benefit out of my video. So I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.